अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास ये सैमसंग का E1920 NVX LCD डिस्प्ले है, मॉनिटर है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब इसको पावर ऑन करते हैं तो इसमें से सफ़ेद धुआं निकलता है और बैड स्मेल आता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इस जगह पे देखें तो यहाँ पर स्मोक साइन नज़र आ रहे हैं। Yes, we can see this capacitor. DC वोल्टेज तो ये 297 वोल्ट है, तो ये कैपेसिटर डैमेज हो चुका है। अभी चूँकि लोड नहीं है, अगर लोड होगा तो ये जल्दी हीट अप होगा और ये स्मोक देगा। तो अभी हमें ये कैपेसिटर रिप्लेस करना है। It is showing 8 microfarad. Its value is 100 microfarad and it is showing 8 microfarad.
It is 88.4 microfarad. Yes, its ESR is good, 87 microfarad, and ESR is low, 0.00 ohms. That's good, we will use this capacitor. If you check the old one, it is showing just only resistance, it is not showing capacitor. That means its internal dielectric is short circuited. It is showing as a resistor. So that is the reason it was heating up and it was giving smoke. Take care for the polarity. अब यहाँ पर इसके वोल्टेज देख लीजिए, 333 वोल्ट मेंटेन हो चुके हैं। इससे पहले जब हमने चेक किया था तो वो 280 के करीब यहाँ पर वोल्टेज थे। नॉर्मली अगर कैपेसिटर बिल्कुल ओपन हो चुका हो तो वो 200 वोल्ट के करीब होते हैं, 220 वोल्ट के करीब होते हैं। अभी हम इस बोर्ड को मॉनिटर में लगाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। ये भी डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बोर्ड भी क्लियर हो चुका है। Yes, it's now powered on and it is showing check signal cable. That means its power circuitry is now good.
अब इसमें जो प्रॉब्लम था, इस कैपेसिटर की वजह से स्मोक आ रहा था, वाइट स्मोक आ रहा था इसमें से, और बैड स्मेल आ रही थी। ये कैपेसिटर रिप्लेस किया तो अभी ये पावर ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।